There's news, there's sense, and there's nuisance. And when it comes to Rubika Liaquat, there is only nuisance. जानते नहीं है कौन हूँ मैं, छेड़ना मत, छोड़ूंगी नहीं अम्मी। Rubika आखिर क्यों भड़की? Because she got into a totally फालतू तू मैमे with an SP spokey अमीक जमाई। 2 सीटें लाए हैं, जो थी वो भी चली गई है अमीक साहब। अब ये ऐसे वैसे टशन मारना बंद कीजिए अमीक जमाई साहब। अमीक जमाई साहब सुनिए, आप भी, आपके पापा भी, आपके पूरे माशाल्लाह खानदान से कहिए कि बैठकर थोड़ा सा मंथन और चिंतन कर ले। मैं बिल्कुल लोकतांत्रिक बोल रही हूँ। आपने पापा की याद दिलाई तो मैं आपको आपके पापा की याद दिला रही हूँ। अरे पापा को बाद में याद कीजिएगा ना, बंद हो जाएगा। पापा को बाद में याद कीजिएगा, अभी जो पाप हुए हैं उसको याद कर लीजिए। मिस्टर अंतर ब्रह्मांडीय पार्टी वाले, हमारा पुलिस आपकी अंतर ब्रह्मांडीय जो पार्टी है समाजवादी, एंकर बैठ नहीं पाएंगे वहाँ पे अगर हम चाहें तो। फिर क्या था? रूबिका ने भी दिखा दिया कि वो कौन है। एक सेकेंड सुनिए, उत्तर प्रदेश सुनिए, अपने घर की औरतों को डराना ऐसे, मुझे मत डराना। इस शो का नाम गूंज से बदल के गुंडी कर दो। क्या मतलब है कि हमारा पुलिस वाला होता तो आप वहाँ बैठ नहीं पाती। ये अपने घर की बहनों के साथ इस लहजे में बात कीजिएगा, मुझसे ऐसे बात मत कीजिएगा। जानते नहीं है कौन हूँ मैं, छेड़ना मत, छोड़ूंगी नहीं अम्मी, छेड़ना मत मुझे। जानते नहीं हूँ मैं कौन हूँ, बिल्कुल नहीं जानते हो मैं कौन हूँ। ये अपने घर की बहनों के साथ इस लहजे में बात कीजिएगा। कैसी सेक्सिस्ट लाइन ऑफ अटैक है रूबिका। किसी भी औरत के साथ कोई क्यों ऐसे बात करे, घर की औरतों को कोई क्यों डराए धमकाए। मतलब इवन व्हेन वी वांट टू टेक योर साइड, यू डू समथिंग टू मेक इट इम्पॉसिबल टू टेक योर साइड। हाउ ऑन अर्थ आर यू टॉकिंग इवन? सुनिए, बट हियर वी आर and this is news and these are our news professionals. रूबिका की सारी गूंज की प्लेलिस्ट देख लो, कोई ना कोई किसी पे भड़क ही रहा होता है। बीच डिबेट, रूबिका ने लगाई प्रवक्ता को फटकार। ईवीएम के सवाल पर क्यों भड़क उठे आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर नवल किशोर। बीच डिबेट क्यों भड़क गई रूबिका लियाकत। This channel is owned by the richest man in India and just see what they have to offer us in the name of news. 5 से 6 रूबिका की गुंडाई। एक सेकेंड सुनिए, उत्तर प्रदेश सुनिए, अपने घर की औरतों को डराना ऐसे, मुझे मत डराना। 6 से 7 हाँ जी, बीजेपी की लीड। अरे ठंडी है क्या? अडानी जी मिले थे तो 7 से 8 मर्यादा मैन। जाओ यहाँ से, I will never call you। और 8 से 9 जहर। गेमिंग जिहाद का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ गया। लव जिहाद करने वालों को पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ सकती है, पूरी जिंदगी। हो गई न्यूज। कोई बिजनेसमैन आखिर न्यूज में क्यों इन्वेस्ट करता है? रूपर्ट मर्डॉक, जेफ बेजोस, इंडिया के दोनों मोटा भाईज। Why does big money invest in big media? For respect, for clout. मीडिया से आप इन्फ्लुएंस खरीद सकते हैं, बट आई गेस कुछ चीज पैसे भी नहीं खरीद सकती। Meanwhile, NDTV this week was busy proving to Adani that he made the right investment in them. क्या राहुल गांधी जानबूझकर या बेवकूफी में देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के हाथ खेल रहे हैं? कितने बेवकूफ है राहुल गांधी। और बताओ। अदानी ग्रुप के खिलाफ फर्जी रिपोर्टिंग, सवाल पूछे जाने पर भागे राहुल गांधी। एक बार सवाल का जवाब नहीं दिया, दूसरी बार भी सवाल का जवाब नहीं दिया, तीसरी बार फाइनली राहुल ने जवाब दे दिया डर डर के। You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he is going to deny the charges. The point is, he has to be arrested. The point is, he has to be arrested, as we have said. माय गॉड, कितना डरा हुआ लग रहा है राहुल गांधी। फर्जी रिपोर्टिंग कौन कर रहा है एनडीटीवी? Baseless bribe brouhaha. Top legal minds call out Kong on Adani. This is a conspiracy against them. It's not a conspiracy by them. What do you base the statement you just made on of yours that there is a conspiracy at some level against the Adanis presently? But you mentioned China. Do you believe that in this case as well there is a potential China hand to destabilize things, the Adani group? Is this an attack therefore against India in a sense that given the fact that this is among the largest corporates in Asia, it employs
tens of thousands of people. It's been growing at a phenomenal pace. In a sense, do you believe that this is an attack not just against the Adani Group, but the India growth story? For some reason, Vishnu Som himself doesn't seem convinced of this conspiracy against Adani. Or maybe he still wants to sound a little respectable while shilling for Adani. Rajat, do you believe that there's a conspiracy at work over here? The word deep state has been used quite frequently in the last couple of days. And I do suspect that that word deep state is used, by those who believe that their interests are being targeted. It depends. The left uses it, the right uses it as well. And it leaves a lot of people utterly confused on what exactly is the deep state. What is your understanding of the deep state? Do you believe in that philosophy or the theory that there is some interest which is hidden, which is working against India? The word deep state, the left uses it, the right uses it. Actually confusing concept, this word, this deep state word. What does it mean philosophically? Do you agree with it? I'd like to debate on this very concept of, deep state. छोड़ो यार विष्णु सोम, सीधा डालो टुकड़े टुकड़े गैंग आफ्टर अदानी, प्लॉट टू डिस्टेबलाइज इंडिया बाय सोरोस, थोड़ा नक्सल डालो, थोड़ा एंटी नेशनल डालो, बी कन्विंस्ड ऑफ योर जॉब टू डिफेंड अदानी. डोंट डू दिस मिडिल ग्राउंड ऑफ आई लाइक टू डिबेट दीज कॉन्सेप्ट्स. बातें अर्नब जैसी करनी है, लेकिन दिल्ली की लेफ्ट लुटियंस लिबरल लॉबी में पार्टी का इन्विटेशन भी चाहिए. ऐसा थोड़ा ना होता है. बकवास. Of course, in all of this programming where NDTV is telling us that top lawyers have defended Adani, they didn't give us the teeny tiny detail that Mukul Rohtagi is not just any top lawyer. He's a top lawyer who has formally defended Adani in the past. And Mahesh Jethmalani, well, he's been nominated as a Rajya Sabha member by the current dispensation and he's been with the BJP. Both of them still may be great lawyers and great legal minds, but there's a teeny tiny bit of disclaimer that should come with it, no? Re-uttered the words, "I am sorry, Babu." What a long way NDTV has come. Just this week, the CBI closed the corruption and fraud case against NDTV's former bosses, Pranay Roy and Radhika Roy. There was no criminal wrongdoing on part of the Roys. That's what CBI says in its closure report. Yet, Pranay Roy had his house raided, he had his offices raided. There was a full-on media campaign run against NDTV. देखो ये हवाला ऑपरेटर, देखो ये कहाँ से पैसे ला रहे हैं. Right-wing brigade was celebrating when CBI raided Pranay Roy's house. At News Laundry, we covered this case right from the start and we knew it's not what it's being made out to be. टाइम मिले तो हमारा ये वाला एपिसोड जरूर देखना where we tell you about the case and how Adani finally bought the channel that was mired in a criminal case. Khair, cut to 2024, Roy's did no crime according to CBI, Adani bought the channel and ab sab changa si. Now the big news this week was violence in Sambhal. It was 10 a.m. on a Sunday morning. 18-year-old Mohammad Ayan left home to go to a dhaba where he worked as a helper. On his way, he saw that a crowd had gathered around the Jama Masjid. In the ensuing clash between the police and the protesters, Ayan was shot with a bullet on his chest. He died because of his injuries. Our reporter Avdesh Kumar met his family the day his body reached home. पुलिस ने 10 मिनट का टाइम दिया था. 10 मिनट में सब हम लेकर आए हैं. 9:30 बज चुके हैं यहाँ पे. वो पुलिस प्रशासन साथ मौजूदगी की है. बस यही कहेंगे सर जो भी हो रहा सही नहीं हो रहा है. Mohammad Ayan was not the only one. Naeem Ghazi, Bilal and Kaif also died owing to gunshot wounds suffered in the violence on November 24th. The police has said that the gunshot wounds are not from the rifles used by the police. And of course, the matter is under investigation. Meanwhile, they have become a mere statistic in news reports that said 4 people died in Sambhal violence. More than 30 years after the Babri Masjid demolition, बाबर की बनाई एक और मस्जिद पे communal tensions हो रहे हैं. 4 लोग already मर गए हैं. Countless people have been injured. There have been multiple arrests and a riot broke out in the city. संभल में अब इंटरनेट बंद है, स्कूल बंद है, सड़कों में बैरिकेड्स हैं. Life has come to a halt. The mosque in question is Sambhal's Shahi Jama Masjid, built in the 16th century by the Mughal Emperor Babur.
Before we get into the details of the violence that killed 2 people, let's go back in time to understand the history of the monument and the resulting conflict. 21st century की भारत की बात छोड़ो, let's go all the way back to medieval times. It all started with the establishment of the Mughal Empire in India by Babur in 1520s. It's always the Mughals. Between 1526 and 1530, 3 major mosques were built. The Babri Masjid in Ayodhya, the Kabuli Mosque in Panipat, and the Jama Masjid in Sambhal. The mosque in Sambhal was built in 1526 and the construction was supervised by one of Babur's trusted lieutenants, Hindu Beg. In 1920, this mosque was notified as a protected monument under Ancient Monuments Preservation Act 1904. This mosque is also listed as a centrally protected monument under the Archaeological Survey of India. Now, Sambhal also holds religious significance for Hindus. It's considered to be the future birthplace of Kalki, Vishnu's 10th avatar, which is supposed to appear in Kali Yuga. Hindus believe the descent of Kalki will end the dark age of Kali Yuga and usher in Satyug. Earlier this year, PM Modi even laid the foundation stone of the Grand Kalki Dham in Sambhal. जहां प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रख रहे हैं, वहां शिलान्यास कर रहे हैं. So this religious and political history forms the core of the current dispute in Sambhal. But you must be asking कि बाबर ने मस्जिद 500 साल पहले बनवाई, वेद पुराणों में भी काल्की का जिक्र कई हजार सालों पुराना है, तो ये सारा झगड़ा जिससे 4 लोगों की मौत हुई और बहुत से लोग इंजर हो गए, ये अभी क्यों हो रहा है? ये जानने के लिए आप पहले इनसे मिलिए. कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि कल्की महाराज का जन्म होने वाला है और यहाँ कल्की जी के लिए कुछ करना चाहिए. सपने में अनुभूति हुई. दिस इज हरिशंकर जैन, जिनको सपनों में अनुभूति हुई कि कल्की महाराज के लिए कुछ करना चाहिए. ऑब्वियसली न्यूज चैनल वहां पहुंच गए माइक लेके कि क्या करना चाहिए बताइए. और यहाँ कल्की जी के लिए कुछ करना चाहिए. सपने में अनुभूति हुई. सपने में जी. Now if you don't remember this guy, he is also the petitioner in the Gyanvapi Kashi Vishwanath Mandir dispute. He is one of the petitioners जिन्होंने संभल कोर्ट में 19 नवंबर को एक पिटिशन फाइल किया कि संभल में जो जामा मस्जिद है वहां सदियों से पहले एक श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था dedicated to Lord Kalki. The petition says that this temple was built by Lord Vishwakarma himself at the beginning of the universe. So going back all the way to Big Bang now. इनकी ये डिमांड है that they should get unrestricted access to the mosque, claiming their right to worship was being unlawfully denied. तो भाई ये तो थी petition. This was filed on November 19th and because the matter was so serious, so important, इतना ज़्यादा urgent था कि कुछ ही घंटों में court ordered the survey of the mosque on the very same day the petition was filed in the court. All you टुकड़े गैंग टाइप्स हुसे जुडिशरी कुछ नहीं करती, कितना लेट करती है, कितना देरी होती है केसेस में. जस्ट सी हाउ आवर कोर्ट्स आर सो प्रोएक्टिव. मतलब इन महाशय के सपने में कुछ आया, वो देखकर इन्होंने पिटिशन फाइल कर दी और इसके कुछ ही घंटों में कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया. वाह क्या सीन है. Please note that this swift action by the court is in a country where lakhs of cases are pending to be heard. And guess what? Allahabad High Court is number 1 when it comes to case backlog. Allahabad High Court is in UP, of course. The court order, anyway, was issued in a hurried manner. The mosque's managing committee was consulted for the survey, but the court order seeking a survey report by November 29th was passed without hearing both sides. The Muslim side didn't get the chance to appeal this. The first round of survey, anyway, took place on November 19th without any incident. November 22nd, the mosque also held Friday prayers, which went on peacefully. Cut to November 24th when the violence took place. This happened while the second survey was taking place in the mosque. Locals say that they didn't know about the second survey. A tense situation ensued when they saw the police force, surveyors, Hindu petitioners gathered outside the mosque to enter it. A situation rife for rumor mongering. During the second survey, a water tank inside the mosque was emptied out. After this, a rumor spread fast that the mosque was being excavated. A crowd gathered outside and a situation which was already tense became worse. Now please remember, people still have memories of the Babri Masjid. And when it comes to the current Yogi government that lords itself in bulldozer justice,
there's heightened sense of paranoia among Muslims. In this atmosphere of paranoia and rumors, a crowd of protesters began pelting stones. Police fired tear gas, and it's alleged by some that they also fired at the crowd. 4 people died in this violence. A video emerged showing the police personnel firing a gun. Police has cleared that they were just firing pellet guns. Police personnel were also injured in this whole affair, and they have said the crowds fired gunshots at them. 27 people have been arrested so far. Local authorities have imposed a ban on entry of outsiders, social activists and politicians to the city till December 1st. Internet services have been suspended and schools, of course, have been shut. The family of the victims have to deal with grief and also financial instability. Naeem operated a sweet shop, Bilal owned a clothing shop, and Kaif sold cosmetics in the weekly market. The media's job in all of this is to highlight stories of people who are suffering, true loss, and how damaging this business of digging up old ghosts is. Instead, we get primetime anchors giving full airtime to Vishnu Jain, the lawyer from the petitioner's side. आप लोग जब जा रहे थे तब ये इस भाव से जा रहे थे कि जय श्री राम, देखो अब जो है हम यहाँ आएंगे और हमारा डंका बजेगा। आप कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं थी, बहुत शांति से गए थे आप। कि जब मैं जा रहा हूँ मस्जिद कमेटी में तब नारे लगाए जा रहे हैं जय श्री राम के, जबकि वो वहाँ से निकलने का वीडियो है। थैंक गॉड इन्होंने बस निकलते वक्त जय श्री राम के नारे लगाए थे। टेंस सिचुएशन था एरिया में, कम्युनल वायलेंस जैसी सिचुएशन बन रही थी। वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगाने से सिचुएशन बिल्कुल पीसफुल हो जाती। It was a completely normal thing to do. Now, ideally in the aftermath of Sambal violence, you would want your news anchors to be a little calm and talk some sense. काम जाए भाड़ में, न्यूज 18 में you get this. एक और एंगल आ रहा है इस पूरे मामले में, ये तुर्की और पठानों की भी लड़ाई है। इस पर आप कहना चाहते हैं क्योंकि सांसद तुर्क है वहाँ के और विधायक पठान है। पॉइंट आपको धमकी आ रही है, विष्णु शंकर जैन को धमकी आ रही है। आग संबल में बुझाने के बदले न्यूज 18 अपने ही शो में आग लगा रही है, क्वाइट लिटरली। कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। अनुराग भदौरिया, अगर विष्णु शंकर जैन को कुछ होता है तो अखिलेश यादव और समूची समाजवादी पार्टी जिम्मेदार होगी। लौटने के वीडियो को जाने का वीडियो बता दिया, क्यों करा? आप अपने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? किसी की जान को खतरे में क्यों डाला? नुपुर शर्मा के हालात नहीं देखे आपने क्या हुए? Things have gotten so bad that I actually have to turn to Sudhir Chaudhary and Rajat Sharma to speak some sense and call for peace between two communities. संबल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया, 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट पे दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर मस्जिद को मंदिर कहना, हर जगह विवाद खड़ा करना समाज के लिए अच्छा नहीं है। आज हमारा कहना यह है कि कब तक हम उस इतिहास में जीते रहेंगे? क्या अब हम आगे नहीं बढ़ सकते? क्या अब हम इन सारी चीजों को भूल नहीं सकते? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदू पक्ष इतिहास को भूलकर अब आगे बढ़ जाए और मुस्लिम पक्ष भी हिंदुओं की भावनाओं का अब सम्मान करे? क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना और इसके लिए सांप्रदायिक संघर्ष और तनाव पैदा कर देना सही हो सकता है? और ये हम कब तक करते रहेंगे? कब तक? Kudos to both Rajat and Sudhir. This is what we need from our primetime anchors. Some sense. Although Sudhir, white के साथ साथ थोड़ा black भी ले ही आता है। आज संबल भारत के उन इलाकों में से एक है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुसलमान बहुसंख्यक हैं। शांति की अपील के साथ थोड़ी थोड़ी मिर्ची भी लगा देता हूँ। संबल हमेशा से ऐसा नहीं था। एक जमाने में संबल की 100% आबादी हिंदुओं की हुआ करती थी। आदत से मजबूर। कलयुग में भगवान विष्णु को उस शहर में कल्कि का अवतार लेना होगा जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। ओहो, what a tragedy! Kalki ji will be born in a place with Muslim majority with a Muslim MP. हाँ। यार सुधीर, काफी सुधर गए हो, थोड़ा और सुधर जाओ. You don't have to balance every decent opinion with total bakwas. Now, when it comes to the mosque survey in Sambhal, a lot of people are confused. That isn't this protected by the Places of Worship Act, which means you can't change the character of this mosque. Even if it was a temple, you can't turn it back into a temple. This is where the judgment of former CJI, D.Y. Chandrachud comes into place. This is his biggest legacy.
In 2022, he observed that no place's religious character can be changed. मतलब हम किसी भी जगह का religious character नहीं बदल सकते हैं लॉ के अकॉर्डिंगली, लेकिन बदल नहीं सकते तो क्या हुआ, हम सर्टन तो कर सकते हैं कि इस जगह का रिलीजियस कैरेक्टर क्या है. जांच तो कर सकते हैं कि जहां आज मॉस्क है वहां पहले मंदिर था या नहीं. जांच से कोई प्रॉब्लम नहीं है. The whole Pandora's box was opened when the Chief Justice allowed a non-invasive survey of ज्ञानवापी. ये काम हिस्टोरियंस या एकेडमिक्स का नहीं है बताना कि किसी भी चीज़ की हिस्ट्री क्या है. अब किसी को भी सपना है कि यहाँ मस्जिद नहीं मंदिर हुआ करता था, वो सुबह उठ के पिटिशन डाले, पूरे स्टेट अपैरेटस लग जाएगी नॉन इन्वेसिव सर्वे करने में आपके सपनों के आधार पे. क्योंकि बाकी सब तो सब चंगा सी इंडिया में जॉब्स मिल रहे हैं लोगों को, इतने सारे जॉब्स ही जॉब. इन्फ्लेशन क्या चीज़ है. और तो और इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है जीडीपी की रेस में. डॉलर वो तो रुपये का मुकाबला ही नहीं कर पा रहा है यार. साफ साफ हवा हम सब इनहेल कर रहे हैं, पानी भी बिल्कुल साफ साफ, हेल्थ केयर बिल्कुल बढ़िया बढ़िया. तो सब लग जाओ खुदाई में. हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ के निकालो. अजमेर शरीफ शिव टेम्पल था अपेरेंटली. ये सपना हिंदू सेना चीफ को आया तो राजस्थान कोर्ट ने बोला चलो लग जाओ सर्वे में. While the world is moving ahead, India can keep going back centuries and keep taking revenge for every historical wrong throughout history, from the Mauryan Empire to the Mughal Empire to the British Empire, because that is what Viksit Bharat should be all about. हर शहर में हर मॉस्क का सर्वे कराओ, लोगों को पोलराइज करो, लोगों को उकसाओ. कोई नारेबाजी करेगा, कोई पत्थरबाजी करेगा, पुलिस फायरिंग करेगी, कर्फ्यू लगेगा, आपकी पढ़ाई ठप, आपका बिजनेस ठप, आपके घर वाले घायल, और मीडिया बोलेगी वो देखो बांग्लादेश में क्या हो रहा है. ढाका has gone rogue, viewers, rogue. बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए नर्क जैसे हालात हो गए हैं. Arnab got on Sri Ravi Shankar to discuss what's happening in Bangladesh, where a Hindu priest was charged with sedition. And I couldn't have agreed with Sri more. It's so shameful for a country like Bangladesh, which was known for it being a liberal country, which has been supported by India for its existence from the very first day, to treat their minorities the way they are treating it. Double Shri is totally right. Shameful for a liberal country to mistreat their minorities. Keep the politics away from religion. Make sure that you take care of those radical elements who would ransack your country's peace and prosperity and take it backward. Keep politics away from religion. Keep it away from radical elements who take your country backwards, several centuries back, like to the 16th century of Mughal rule. Religion and the country are two different things. There are Christians living in India. We don't think that they are only, they are loyal only to Vatican. There are Muslims living in India. They are fully Indian Muslims and who are so full of Deshbhakt. They have many Muslims in India. They identify themselves with only India. Like that, Bangladesh Hindus, they identify themselves with only Bangladesh. It's a confusion or mixing up nationality with religion. Religion and country are two different things, yaar. Don't mix nationality with religion. To some extent, technically, the government of Bangladesh can argue that it's an internal matter. But is it not a humanitarian matter? Human rights is a global issue. Human rights and human values are a global issue. Human values are global issue? यार अर्नब, हम बोले तो हम जॉर्ज सोरोस, डबल श्री बोले तो गुरुदेव. Gurudev Pranam Charan Sparsh. Hypocrisy की भी सीमा होती है. My concern also is, Gurudev, that sometimes, these situations are created by governments who are not able to handle an economic situation, or who are not able to handle a law and order situation, who are not able to handle an energy crisis. We saw reports of an energy crisis, that the Bangladesh government not able to pay its power bills to the Adani group. These are, of course, economic matters. But I think governments must be concerned and wary that they can't distract people from the real issues that face them. My question is that you can't distract angry people by making them focus on targeting the Hindu community. Really, Arnab? Governments can't distract people from hard issues by targeting minorities in their country? Really? Actually, they can if they have the media on their side. भारत में रहना है तो प्रधानमंत्री ने जो बोला है चुपचाप उसको फॉलो करो, चुपचाप बिना कुछ पूछे. If you guys want to know more about Sambhal and what exactly happened there,
Do catch our video report by Avdesh Kumar, who was present on the ground. He's brought you a very detailed report that gets all sides. Families who've lost their kin, the police that's been injured, both legal sides in this case, and he looks at what really happened for things to have turned so bad. So do catch that video on our YouTube channel, and remember, we are able to do these stories because we have your support. Our allegiance is to no one in all of this. Our allegiance is to fair reporting from the ground that gets you the truth. So do catch Avdesh's report and do support News Laundry so we can continue to do ground reports that matter instead of shouting debates that I'm sure all of you are fed up of. Big announcement. This year, we rolled out some big updates to make our website and app more accessible to everyone. We've added features to help people with color blindness, with visual and hearing impairments to access news on our website. And the response has been amazing. We've heard from so many of you about how these changes have made it easier to access our journalism. Thank you for sharing your experiences with us. Next week on December 3rd, we'll be marking the International Day for People with Disabilities. Stay tuned, you'll see some videos and updates where we at News Laundry will reflect on our accessibility journey so far. If you're a user with disabilities and you have been using our platform, we'd love to hear from you. Drop us an email at subscription@newslaundry.com and let us know what you think. Your feedback is invaluable as we continue to improve and make News Laundry even better for everyone. That's all the nuisance we have for this week. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way.